that the demand for a constituent assembly, this emerges only by 1934. Before 1934, we only see some efforts which were made by people in India to frame a constitution, or I would say a blueprint of the constitution. But there was no demand that how you should frame a constitution, and for that the first and foremost requirement is that you should constitute a constituent assembly. So that is what we see in 1934. तो देश में संविधान बने या भारत का संविधान कैसा हो, इसकी रूपरेखा, इसकी चर्चा हमें नजर आती है भारत में। 1895 से ये चर्चाएं शुरू हो गई, लेकिन एक संविधान सभा बने जो कि भारत के संविधान का निर्माण करे, ऐसी चर्चा हमें 1934 से पहले नजर नहीं आती। तो एक पक्ष हमें ये समझना है कि भारत के अंदर what were the historical demands for a constitution/constituent assembly. Okay? So these are just some background information that I am still trying to give you. So historical demands of a constituent assembly, but because it was not demanded, so we say /constitution. So let us refer to these and move forward. Because after that, the only focus that we have is that we have to analyze the Constituent Assembly. So if you remember the previous class, the discussion that has taken us to the stage where we have formed the Constituent Assembly. Yes or no? So we have discussed about 2-3 very vital facts of history. One was the August Offer. Everybody remembers the August Offer? Very good. The second was the Cabinet Mission Plan. So Cabinet Mission Plan basic thrust was, it said that there will be a Constituent Assembly. So it talked about the procedure of the formation of the Constituent Assembly, which means the election that will form the Constituent Assembly, and it also gave the permission to the same Constituent Assembly to act as a interim government. आमतौर पे जो interim government का concept है, इसका concept सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो आपको दिखता है वो यही दिखता है। जैसे हमारे देश में अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपके पास किस तरह की सरकार है, जो एक चुनी हुई सरकार मान लीजिए नहीं है, चुनाव के बाद अभी नहीं आई है, तो दो शब्द आपको सुनाई पड़ते हैं। एक जिसको कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट, है ना, डिसोल्यूशन हो गया है आपके विधानसभा का या लोकसभा का, तो वो सरकार तो खत्म हो गई, बट स्टिल अनलेस अ न्यू गवर्नमेंट इज गिवन ओथ, द गवर्नमेंट कंटिन्यूज, द प्रेसिडेंट आस्क्स द गवर्नमेंट टू कंटिन्यू। सो वी से कि ये क्या है, कार्यवाहक सरकार है। सो वी से इट्स अ केयरटेकर गवर्नमेंट। सो केयरटेकर गवर्नमेंट इज विजिबल टू यू एवरी 5 years आल्सो। 5 साल में भी एक समय होता है जब डिसोल्यूशन होता है और जब नया ओथ होता है, उसके बीच समय तो होता है एटलीस्ट 10 days। तो कार्यवाहक सरकार आपको हर 5 साल में भी दिख सकता है, कभी-कभी अगर मध्यावधि चुनाव हो गए तो पहले भी दिख सकता है, डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। हालांकि ये पार्लियामेंट में हमको देखना है, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट शब्द आया इसलिए मैं ये समझाना चाह रहा हूं। इंटरिम गवर्नमेंट आपको किसी भी देश को ऐसी अवस्था में ही दिखता है जब you have a interim government which works until there is a first election for the country that will take place. So it is basically a transitionary stage for a country where a country is moving from framing a constitution for itself and then they would have an election that will decide the formation of the new government. उसके बाद केवल केयर टेकर गवर्नमेंट होगा, इंटरिम गवर्नमेंट कभी नहीं होगा। ओके, तो भारत की जो एकमात्र इंटरिम गवर्नमेंट रही है वो कब रही है? आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच वाज सेट अप इन 1946। और हमने अपना चुनाव कब कराया? वी नोटिफाइड आवर इलेक्शन इन 1951 अक्टूबर
चुनाव 52 में हो गए हमारे देश में, तो which means our interim government continued for how long? Roughly 5 years, 46 से 51 तक, है ना? And after that we had a government. तो ये होता है जिसको कहते हैं interim government. इसकी इजाजत भी कहां से मिली इस interim government को फंक्शन करने की इजाजत? From okay, from the which committee, which plan? Cabinet mission plan. Who were the 3 members of this plan? So everybody knows it. You have all written it. Very good. So what I need to do is, can I proceed further? Anything that you need to ask from the previous discussion we had in the class? So you're free to ask. Yes. So, she's trying to why should you need Indian polity from me? Okay, so it is like marketing that I should actually pitch it. So, I think why you should do Indian polity with me? So, the only answer that I can give you is that you are allowed to have some demo classes. Yes or no? Yes. So, I think after your demo classes, you would be in a better position to answer or make this decision that should you study the Indian polity with me or not. So instead of me saying or pitching for me or pitching for myself that I'm the only one who is going to give you a very nuanced understanding of Indian polity and constitution, I cannot say that because this is something which everybody can do or anyone can do. So I'm not special in that sense or I'm not extraordinary in that sense. The only thing I can say is that I love teaching, I enjoy teaching, and I have been doing this as part of my profession, as part of my process to earn my livelihood. So I try to be as honest as possible in my profession. So that's the only thing I can say to that. On the other question, she wants to know my name because I think she would have not been there in the first class. That is why you don't know my name. Otherwise, I have said this in the first class itself. I am Ashutosh, and it has been like more than 13 years that I have been teaching. So it's been more than a decade and a half that I have been teaching, as well as learning. So that's a short introduction that I needed to again give. So if people join again, so it is your duty now to tell them what's my name. Okay? रोज मैं अपना नाम बताऊं ये भी अच्छा नहीं लगेगा. People will think कि भाई अपने नाम पे इतना emphasize क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा भी विशेष नाम तो है नहीं. It's very common name. और नाम में क्या रखा है? So historical demand. So when you realize that we are in the process of framing our constitution, so there is one line of argument that we have already drawn. So one of the better ways in which to analyze it, the historical laws that existed for the making of the constitution. उसमें मैंने कहा कि 1935 is like the most prominent source that we have to refer to. What about people in India? So I can tell you one thing, that before 1895 there is nothing of that sort which talks about any kind of a bill or any kind of an initiative by Indians who would tell you that how you should basically frame rules, regulations in the future India. But this 1895 is crucial. Why it is crucial? Because this is the first time when you have a Swaraj bill in place. And it is published by Annie Besant. But we say that this has been a combined effort of Annie Besant plus Bal Gangadhar Tilak. How do we know that? Because Annie Besant says this, that Bal Gangadhar Tilak has influenced this bill enormously. हमारे लिए conceptually क्या समझना जरूरी है? Why 1895? Why not before 1895?
तो 1895 ही क्यों? 1895 से पहले क्यों? बिकॉज 1895 से पहले देश में बड़ी घटना हो रही है 1885. What is this? Formation of Congress, you all know. So the better part is that in the preliminary classes, that we do to actually help you to sit in the class, is to show you the correct way in which you also have to now understand the analytical aspect. Because information you already know, but what you need to know is the question, how, why, what. So all the W's that we are looking at. आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो ये 95 इसलिए क्रूशियल है बिकॉज 1885 में कांग्रेस का जन्म होता है, और कांग्रेस का जन्म होता है उसके बाद सबसे ज्यादा क्या कोशिश हो रही है हमारे देश में कि हमें थोड़े प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले. दैट इज वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट. वी आर एक्चुअली डिमांडिंग सम राइट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ब्रिटिश राज. यही तो डिमांड है अर्ली कांग्रेस फेज में. स्वराज भी जब आया तो इसने हम डोमिनियन स्टेटस में जब हमें प्राप्त हो अंग्रेजी सरकार से, जब हम अपना शासन खुद चला सके, तो ये बिल उसके लिए एक ब्लूप्रिंट लेकर आता है जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से बनकर हमारे सामने आता है एज अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू गवर्न द अफेयर्स ऑफ द कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या है? इट इज अ रूल बुक. स्वराज बिल क्या है? दिस इज आल्सो अ रूल बुक जो हमें ये बता रहा है कि अगर हमें डोमिनियन स्टेटस स्वराज मिले तो उस वक्त हम अपना संचालन कैसे करेंगे, उसकी एक रूपरेखा बता रहे हैं कि हम लोगों को क्या अधिकार देंगे, है ना, हम किस तरह से पावर को डिवाइड करेंगे, जो चीजें आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं. सो दिस इज रफली द फर्स्ट एफर्ट दैट यू सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बिल व्हिच इज स्वराज बिल. And Annie Besant is known for her movement for home rule. So you can very well understand the effort that the bill has given to us in the sense that how we are going to create a constitutional framework in India if India is given the dominion status. अभी उस वक्त देश में आजादी की बात नहीं हो रही, हम डोमिनियन स्टेटस पे अपने आप को समेट कर रखे हुए, डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही है. बट नेक्स्टली हमें काफी दिन रुकना पड़ा टू गेट समथिंग अनदर इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट व्हिच वुड हैव टॉक्ड अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट प्लेस. यानी इस पर बहुत एफर्ट नहीं हो रहा था उसके बाद. सो देयर आर मूवमेंट्स डेफिनेटली दैट यू रीड इन हिस्ट्री. सो यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ मूवमेंट्स, द मॉडरेट मूवमेंट, देन द मूवमेंट बाय द एक्सट्रीमिस्ट, then the movement by the revolutionaries, the home rule movement, and then the Gandhian movement. But what is important to know is that even in the 1920s, there are only appeals for framing a constitution for India. But there is no blueprint, there is no document. The next document that we get is 1928, and this is called Nehru Report. This is the second attempt where Nehru Report is a very important document that we have to refer to understand that what should be the future course of action in India to frame this constitution. भारत में हम एक संविधान बनाएं तो संविधान कैसा हो, इसकी रूपरेखा नेहरू रिपोर्ट में नजर आती है. नेहरू रिपोर्ट हमें देने की कोशिश करते हैं. दिस इज सेकंड अटेम्प्ट. और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि भारत कभी कोई संविधान बना ही नहीं सकता. Why? Because India is a very heterogeneous society, and the English were using their tactics of divide and rule. Okay, so 1909 Government of India Act 1990, they have actually given the divisive aspect a full 360 degree in the Indian context. तो जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज भारत में थे सबको उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दे दिया था. And I have been insisting on one name, and I told you in the previous classes as well, that if you just read Bipin Chandra's book and his chapter on the rise and growth of communalism in India,
he said that if I have to choose one factor that leads to the partition of India, then I will say that it was the issue of separate electorate. Because once you are in a separate electorate, then politically you don't need to be preaching an idea, selling an idea which should be acceptable to all. Because what you need to do, you just need to ensure that your idea is acceptable to only people of your community, people of your co-religion. तो जब आपने किसी को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, तो उसके बाद उस पृथक निर्वाचन क्षेत्र में जो व्यक्ति अपनी राजनीति कर रहा होता है, उसे इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती कि उस पृथक निर्वाचन क्षेत्र में वह दूसरे के किसी विचार की सुध ले, क्योंकि उसे केवल अपने धर्म के लोगों से ही मत मिलने हैं। इसीलिए आमतौर पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र में जो धार्मिक और धार्मिक कट्टरता और उससे जुड़े हुए जो राजनीतिक अपील्स होते हैं, उसमें बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। और यही हुआ भारतवर्ष में जब 37 के चुनाव में जब मुस्लिम लीग की हार हुई, उसके बाद जिन्ना ने उस पूरे मुस्लिम लीग को एक बहुत कम्युनल डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया, where the appeal of the party became very strongly embedded in the ideas of communalism. यानी जो communalism as an idea है, उस communal idea को सबसे strongly emphasize करने लगे वो लोग, जिसकी वजह से उनको राजनीतिक सफलता तो मिली, क्योंकि 46 के चुनाव में मुस्लिम लीग बहुत सफल रहा, खास करके उन प्रोविंस में which was the Muslim dominated province, and those provinces actually went to Pakistan, the creation of Pakistan, except the frontier part, यहाँ पर frontier गांधी हुआ करते थे, यहाँ पे खान अब्दुल गफार खान की पार्टी थी, वहाँ कांग्रेस पार्टी जीती थी, पर बदकिस्मती से because of certain conditions जब पार्टीशन हुआ तो वो एरिया भी पाकिस्तान को मिला, because you can understand that geographically that area was not attached to us. So when this map for the partition was drawn, that province was actually not supportive of the Muslim League. That province was still supportive of the Congress party, but it went to Pakistan. That's a separate story. There are many books that you can refer to, but as long as you are preparing for this exam, avoid reading all these books and just focus on reading the reference books which are crucial for helping you prepare for the exam. तो लॉर्ड बर्किनहेड एक नाम है। लॉर्ड बर्किनहेड ने भारत के लोगों से कहा कि भारत अपना एक ऐसा संविधान कभी बना ही नहीं सकता जो भारत के हर समुदाय को, जिसमें भारत के हर समुदाय की हामी हो, जिसे भारत का हर संप्रदाय, हर समुदाय का व्यक्ति स्वीकार करे। एक चैलेंज दिया भारत के लोगों। So what is it? He said, Buckingham said that India would never be able to construct a constitution which would be acceptable to all the different communities who lives in India. भारत कभी ऐसा एक संविधान बना ही नहीं सकता। तो ये क्या है? ये हमारे लिए एक चुनौती जैसी चीज है। It is basically a challenge to us. It was like a challenge to us. And what is the response of India? The response of India is Motilal Nehru report. If you look into the history will again tell you that it was opposed by Muslim League. But we don't have to go into that debate right now. This is the second major effort that is an indigenous effort by Indians to frame a rule book, a constitution. इसमें भी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, इंडिविजुअल राइट्स की बात की गई है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात की गई है. So that is why this was another very crucial initiative which was brought by the Indians. तीसरा जो एक, अगर मैं इनको दो विषय रखूं, तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण विषय था as far as the trajectory of the formation of constituent assemblies concerned, that came in 1934. And in 1934, there is a very intellectual politician in our country.
आपने इनका नाम सुना होगा, एम एन रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय। मानवेंद्रनाथ रॉय इज वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज इंटेलेक्ट। उन्होंने क्या किया उसकी वजह से वो पॉपुलर नहीं, बिकॉज इफ यू गो थ्रू हिज लाइफ, मानवेंद्रनाथ इज अ very mercurial figure. So just to give you a brief intro why I said this, Manvendranath started as a revolutionary. He becomes a communist, goes to Mexico. So he is sent to Mexico by the Communist Party. In Mexico, he helps in the establishment of Communist Party of Mexico. He is so profoundly intellectual. He has got great understanding of the Marxist ideas that he is in Russia. And in Russia, on the issue of decolonization, he has differences with Lenin. अब लेनिन से डिफरेंस कर लिया तो क्या होगा? पानी में रखे मगर से डर संभव है। लेनिन ने कहा इसको बोरिया बिस्तर बांधो, इसको भेजो। Now because he is a communist revolutionary, so ब्रिटिश वेट कर रही है कि अगर वो आएगा तो बहुत सारे केसेस में पेंडिंग है जो उसके खिलाफ। So he comes to India, he is put behind bars. ये चलेगा बेचारा। He is a staunch critic of Congress. उससे भी ज़्यादा he is a staunch critic of महात्मा गांधी। इसका कहते हैं कि गांधी जो है वो उसका मेडिवल आउटलुक है, बर्बाद कर देगा देश को। Basically he is representing the bourgeois forces. वो उसका basically mouthpiece है, all kinds of things. So suddenly when he is jailed, he realizes one day that no, Gandhi is the leader of the masses. It is only the Congress Party that can take the country forward. And the way we understand Marxism, it is wrong. Marxist ideas will not apply. So we have to change the idea of Marxism. So he starts his concept which is called the concept of humanism, which later he calls it new humanism. So he says that his humanism and the idea of humanism is a new idea. But वहीं पे नहीं रुके, he joined Congress, and inside Congress he wanted to change it and make the Congress party more radical in its demand. So he formed a group of radical congressmen. Again, he did not have good relations with the congressmen. He formed his own party. After a point of time, he said, parties are not good for democracy. In democracy, it should be a party-less democracy. यानी आप देखिए इस व्यक्ति का ज्ञान और उस ज्ञान का किस तरह से उन्होंने बार-बार इस्तेमाल किया। हर चीज को लेकर के उनके मन में सवाल रहे, and it's a very good thing. So we should never be a prisoner of an idea. We should keep questioning an idea. हमेशा हमें किसी आइडिया से सवाल करते रहना चाहिए। और एम एन रॉय ने यही सवाल किया। लेकिन एम एन रॉय की चर्चा हम अभी क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में तो कोई बड़ा योगदान नहीं दिया, पर उनकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एम एन रॉय इज द फर्स्ट पर्सन हु सेड दैट इंडिया शुड फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, should form a constituent assembly to frame its own constitution. That is why we basically talk about M N Roy, because he is the one person who said that India should frame its constitution through a constituent assembly. Because before 1934 we have not seen an indigenous demand emerging from India for the formation of a constituent assembly to frame a constitution. That is why M N Roy and 1934 becomes a crucial historical incident for us. उन्होंने कहा कि संविधान सभा बनाइए और वो संविधान सभा भारत के लोगों द्वारा बनाई जानी चाहिए, जिसमें कि भारत का संविधान बने। बट क्योंकि बहुत पढ़े लिखे आदमी थे तो उन्होंने क्या किया, केवल ये कहा नहीं, यहां तक रुके नहीं वो। 1944 में उन्होंने एक फर्स्ट ड्राफ्ट रिलीज किया और उस ड्राफ्ट का नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। और अपने लोगों को वो ड्राफ्ट पढ़ने को दिया। अभी रेडिकल पार्टी को बना चुके थे रेडिकल डेमोक्रेट्स, उनको उन्होंने ये ड्राफ्ट पढ़ने को दिया।
जहां पर he had a complete vision कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, what should be the economic policy of the government. Okay, so he has a complete vision about the future of India, and he discussed everything in very minute detail. So this is what we basically see in the whole effort of the formation of the Constituent Assembly in our country as one very parallel path, a very parallel track undertaken by many of the people who wanted to ensure that the idea that India should have a Constituent Assembly to frame the Constitution was being put forward. So largely what I say is that there are two very important drafts that we have to refer to. The third important draft emerges in M.N. Roy's first draft, and then there is a demand for the formation of a Constituent Assembly to frame the Constitution. So largely this is what we have in the history. So after this, even Congress party also started demanding कि भाई हमारे पास एक Constituent Assembly होनी चाहिए और भारत को एक संविधान बनाना चाहिए, क्योंकि 1929 के बाद the demand actually moves towards पूर्ण स्वराज, and that is what brought in the decisive change in the way we started conceiving the idea of a constitution or a Constituent Assembly for us. तो हमारे पास ये सब जो इंफॉर्मेशंस हैं, दिस इज लाइक अ बैकग्राउंड, ये पृष्ठभूमि की तरह है कि हमारे पास कितने इंफॉर्मेशन है संविधान सभा के बनने से पहले. तो विद दिस बैकग्राउंड व्हाट इज टू बी एडेड इज द ऑगस्ट ऑफर. And when does the August offer come? What is the year? And this comes by Lord okay. And the second important point is we have to remember the cabinet mission plan 1946, and then Mountbatten plan 1947. So if it is May, it is June. Okay. Two sets of things, and then finally our own Constituent Assembly, which has to act as interim government, and this also will be a Constituent Assembly to frame India's constitution. So this is the background information we need to know. Okay? We need to have. अगर ये background information हमारे पास है तो फिर हमारे पास वो जानकारी है जिसको हम आगे यूज कर सकते हैं. तो स्वराज में the Nehru report, the demand for a Constituent Assembly, then Constitution of Free India, first draft, and finally the plan, cabinet mission plan, and we have a Constituent Assembly. तो यहाँ तक हम पहुँच गए. Constituent Assembly के चुनाव के बारे में भी हमने चर्चा कर ली. Constituent Assembly किस तरह से चुनेगा लोगों को, तो हमारे पास मेंबर्स कितने हैं Constituent Assembly? What is the mode of election? So election is indirect and nominated. Why indirect? Because from the elected members, कौन थे ये elected members of provincial assemblies or legislature. Provincial elections कब हुए थे? 1946. It has ended in January 1946. Already there was election, so there was an elected provincial assembly. And where do you find these indirect elections still existing in India? In the Rajya Sabha elections, and so you have these two very important elections which still has a legacy that emerges from the other areas.
अब राज्यसभा में कौन लोग वोट करते हैं? The elected members of state legislature. Now, when you look at two very prominent institutions, vice president and president. President के चुनाव में कौन-कौन भाग लेता है? तो उसमें बस एक शब्द जोड़ना है, elected members, not nominated members. Okay? What about vice president election? हाँ? हाँ, very good. So vice president के लिए we only need members of parliament. That is both लोक सभा, राज्यसभा. But यहाँ पर हमें क्या जानना है? Even nominated members can vote for presidential election. ठीक है? पर ऐसा क्यों है? For president we have also taken states. Vice president के लिए हमने state को क्यों नहीं लिया? Because हमें ये समझना है the institutions जो constitution ने बनाया है, president एक ऐसा institution है जिसका बहुत ज्यादा concern है with the working of the state as well. But vice president does not have concern with the working of the state. They are only ex officio chairman of Rajya Sabha. ठीक है? तो क्या ये जो बारीक चीजें होती है, इन सब का एक लेयर जो है हमें अपने पीछे से भी नजर आने लगता है, लीगेसी से भी नजर आने लगता है. ठीक है? तो यहाँ पर एक जो चीज हमें नजर आता है अपने लीगेसी से हम जो ड्रॉ कर सकते हैं, that is the idea of indirect election, where chosen representative of the provincial assemblies can elect members through a formula which is called single transferable vote. ठीक है? यानी ये इलेक्शन का जो वोट होता है इसमें एक फॉर्मूला हम कहते हैं, इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. और क्या होता है? The other thing is proportional representation. इसीलिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है. तो दिस इशू ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इशू तो है, पर हम ये तब करेंगे जब हम यूनियन लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में इसको पढ़ेंगे. ठीक है? सो यहाँ पर जो ये स्टोरी है हमारी वो यही है. सो नाउ द होल इंडिया इज आस्क्ड टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एंड हाउ डज द होल इंडिया रिप्रेजेंट इटसेल्फ? थ्रू दिस फॉर्मूला व्हिच इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी. See, constituency and districts, they are two different set of things. District and constituencies does not mean one thing. District is a administrative setup. Constituency is a electoral setup. This is what you have to understand. Why? Because when you say constituency, a constituency is determined by a population that should almost be proportionally equal to all the constituencies that you have created. So if you remember, I told you that India's population was roughly around 38 crores, and therefore, what was the rough estimate for a constituency? It was said that it would be 1 million per constituency. So that is why we had around 389 seats which were allotted or allocated to the Constituent Assembly in the first place. That is when we set up the Constituent Assembly. Okay, what was it? किससे कैसे थे हमारे? 292, 93 and 4, which means this was for provincial legislatures, this was from the princely states, and this was from Chief Commissioner Province, CCP कहते थे उसको. So they were nominated and they were nominated, and these people were indirectly elected. So another story that comes to us is the Mountbatten Plan, June 1947, and it divides the two nations. It agrees for the division. So agreement किनके बीच में हुआ? It was between the Congress, the British, and the Muslim League. So that Congress accepted this formula of division. So now once the division is very clear, so the entirety of the region will not be participating in the formation of Constituent Assembly. So that region or that part which goes to Pakistan, it moves away. That is why again we had a reduction of seats. Okay. So finally, what is the last figure that we have? यहाँ पर हमारे पास कितने लोग आ गए?
हमारे पास जो फाइनल फिगर ड्रॉप किया हमने वो था 299। 299 को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपको क्या याद रखना है? 70 लोग कहां से आए? प्रिंसली स्टेट से आए, है ना? तो आप कितने बच गए 299 में? तो 229 हमारे यहां से आ गए। कहां से आ गए? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से। दिस वाज यहाँ के मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन हटा देंगे। So again, they decided the formula in terms of population and they could allocate these many seats. तो हमारी जो effective strength क्या होगी? ठीक है? And now you know the dates. Dates को हम एक बार फिर से preamble जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देख लेंगे. So this is how you got your constituent assembly. So being a colony, you only could form a constituent assembly when you got a permission from the authorities. एक कॉलोनी होने के नाते आप क्योंकि सोवरेन नहीं है, संप्रभु नहीं है, तो आप अपना निर्णय तब ले सकते हैं इसकी सहमति जब आपको आपके इंपीरियल मास्टर से प्राप्त हो। तो इसलिए जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो उसने हमें ये परमिशन दी और उसके बाद हमारे देश में क्या हुआ? एक तरह से संविधान सभा बन गई। Now this is like the one area that we have profoundly focused on. इससे ज्यादा यहाँ पे आपको जानने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, no, it was just for reading of the people and taking their view. So he basically distributed this draft among his party members. But we say that it is an indigenous effort because M.N. Roy is an Indian, and he is basically the first person to say that there should be an Indian Constituent Assembly which should draft the constitution for future area. Constitution जब भी आप बनाते हैं तो भविष्य के लिए बनाते हैं, ये बात है। तो M.N. रॉय एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बारे में चिंतन किया, लेकिन उन्होंने केवल सोचा नहीं, अपने पार्टी में को उन्होंने खुद से ड्राफ्ट बना के दिया भी, सर्कुलेट भी किया। ये भी एक इतिहास का पक्ष है जो हमें जानना चाहिए। That this is what he did. But finally, when the constitution is made, definitely it has its own ways in which we see people having different opinions and how they would sit, discuss, debate, and then form a constitution. So, impact हम कह सकते हैं उनका था, but M.N. Roy and M.N. Roy's impact in the making of the constitution is not very profound. So that is why it is not discussed also. The major impacts जो हम क्या करेंगे, जब हम अलग-अलग provisions पढ़ेंगे, तो हम हमेशा एक constituent assembly debate से इसको शुरू करेंगे. So that we get the knowledge. For example, if I am doing precedent, so I will look into some of the debates with regards to precedent. So in the Constituent Assembly, you will have people who will support a presidential system, while the others would support a parliamentary system. So it will be a good debate for us to understand कि लोग क्या सोच लेते हैं और उसको debates क्या कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति का मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, तो इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है other than these people. For example, I tell you one name. There is a person called K.T. Saab. इनका नाम आपको कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट में पढ़ने को मिलता है। What is he saying? He is saying that India should have a presidential form of government and not a parliamentary form of government. देखो जब आप अलग-अलग लोगों से बात करोगे तो सबके ओपिनियन तो होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि नेहरू जी जो सोचते हैं वही ठीक है, हम जो सोचते हैं वो गलत है। आज भी आप जो सोचते हैं वो भी ठीक है। सोशल साइंस में आपको हमेशा एक बात सोचना है कि कोई भी चीज गलत नहीं होती। आप जो भी सोच रहे वो सही है, और इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी सोच रहे, ये ध्यान रखना है। मेरे कहने का मतलब है that anything that you try to put forward as a view in a social science, everything is correct if it is logical, if it is reasonable. जुडिशरी कहेगा रीजनेबल होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। ये नहीं कि वो इलॉजिकल हो और आर्बिट्ररी हो, तब तो फिर कुछ नहीं है। फिर आप बोलेंगे नहीं सर हम अभी ऐसे नहीं बैठेंगे, हम जो है सब घूम के बैठेंगे, मेरा ऐसा मन है, ये मेरा व्यू है। क्यों? क्योंकि घूम के बैठने से कान जो है वो हमारे खुले ज्यादा रहेंगे और हमारे कानों में अगर आपकी आवाज ठीक से आएगी तो हम ज्यादा समझ पाएंगे। सो इज इट लॉजिकल? कैन यू प्रूव इट? सो इट इज नॉट आल्सो रीजनेबल। सो यू हैव टू लुक एट मी सो दैट यू कैन कंसंट्रेट। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। So K.T. Saab, he gives his own logic that why India should have a presidential form of government. What is the logic? For simple example I am giving you, the logic is very simple. He says, see India is a British colony, America is also a colony,
of the British. So we have common colonial masters, a common experience. Okay? So we should learn from America. If from the common experience, the Americans have created a presidential form of government, then while learning from the Americans' example, we could also form into a presidential form of government instead of a parliamentary form of government. Because we have the same sort of masters. So why not have a presidential form of government? But what is very interesting to see here is that none of the opinions are completely rejected. That is the beauty of a consensus constitution. That is why even though India has a parliamentary form of government, it is not a pure parliamentary form of government. There are many features of presidential